Very good morning, all of you. My name is Nikhil from Pratham Test Prep. Welcome to everyone who is watching this video. So today I'm going to talk about one of the most premium college in India, which offers 5 years integrated program. Yes, I'll be talking about IIM Indore application form. So guys, IIM Indore was launched in 2011, which 5 years integrated program. Although this particular institute was launched in 1996, but 5 years integrated program was launched in 2011. तब से this is actually a one of the most desired college in India who actually wants to go for 5 years integrated program. We have a lot of students in India who actually don't want to go for 3 years program. They want to get into a 5 years integrated program where they don't have to struggle afterwards for MBA for MBA colleges. Because अगर आप IIM इंदौर में अगर आप चले जाते हैं, you will complete your graduation, you'll do your BBA, and once you complete your BBA, your 2 years for of MBA is already there in the college itself. So you don't have to appear for the different entrance exams. Likewise, we have a CAT, SAT, SNAP, IFT, and MAT. These entrance exams we people generally do for the MBA entrance exams. So those who actually get into the 5 years integrated program, they don't have to struggle for those entrance tests. So that is why there are a lot of students in India जो एक ही वन शॉट में 5 years integrated program में जाना चाहते हैं, and they actually don't want to get into that place where they have to struggle again, give the entrance exam again. IIM इंदौर के अलावा there are a lot of other IIMs which offers 5 year integrated program. उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि 5 years integrated program ऑफर करती हैं. IIM इंदौर के अलावा IIM रोहतक is already there. उसके अलावा IIM Ranchi there, IIM Jammu is there, IIM Bodh Gaya is there. So these are the 5 IIMs which offers 5 years integrated program. इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं like OP जिंदल जो कि ऑफर करती हैं 5 years integrated program. UPES देहरादून, and there are few more colleges which offers 5 years integrated program. So I'll be talking about IIM Indore. I'll be telling you what all colleges except IIM Indore score. I'll take you through the process of filling up the form and those stuffs as well. So before I take you through the process of IIM Indore, let me tell you कि IIM Indore क्यों इतना desired college है, इतना ज़्यादा premium college क्यों है 5 years students के लिए. Okay, so IIM Indore जब भी आप उसमें enter करते हैं, so IIM Indore is one of the oldest IIMs which started offering a 5 years integrated program. इससे पहले 5 years integrated program नहीं होते थे, ठीक है. So that was the first IIM which who launches the 5 years integrated program. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 years integrated program में actually आप enter कर रहे हैं तो you cannot take exit after 3 years. So all the IIMs in India, these 5 years IIMs in India, they offer you एन अपॉर्चुनिटी कि अगर आप 3 साल में अगर आप उसको एग्जिट लेना चाहते हैं, आप 3 साल में भी एग्जिट ले सकते हैं वो पर्टिकुलर कोर्स है. सो सपोजिंगली अगर आप 3 साल अगर आपने IIM इंदौर में अगर आपने स्पेंड कर दिया एंड एनी ऑफ द IIMs और एनी ऑफ द 5 years integrated प्रोग्राम, 3 साल के बाद अगर आपको फिर भी कैट एग्जाम देना है, GMAT एग्जाम देना है, यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर GMAT और दो स्टफ्स, यू कैन गो एड एंड प्रिपेयर योरसेल्फ. यू गेट अ बेटर कॉलेज, you can move and you can actually do the you can move to the other college if you wish to. All right, so all the IIMs give you the opportunity कि आप उसको 3 years के बाद भी आप उसको मूव कर सकते हैं दूसरे कॉलेजेस में. ऑलराइट, सो IIM इंदौर के अलावा देर आर लॉट ऑफ अदर IIMs जो कि IIM इंदौर का score accept करते. There are or a few more institutes and colleges which accept the score of IIMs. So I'll be talking about the colleges which accept the score of IIMs. So IIM Ranchi है एक, IIM Ranchi स्कोर एक्सेप्ट करता है IIM इंदौर का. सो अगर आप IIM रांची के लिए भी टारगेट करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू फिल द फॉर्म फॉर IIM इंदौर फर्स्ट एंड देन फिल द फॉर्म फॉर IIM रांची. इसके अलावा दिस कॉलेज कॉल्ड निर्मा यूनिवर्सिटी इन IIM इन अहमदाबाद विच इज सिचुएटेड एट गुजरात. वहाँ अगर आप निर्मा यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यू विल हैव टू फिल द फॉर्म फॉर IIM इंदौर. दैट मीन्स आप निर्मा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको IIM इंदौर का भी फॉर्म फिल करना होगा, निर्मा के लिए भी फॉर्म फिल करना होगा सेपरेटली. सेम गोज विद एक यूनिवर्सिटी है, एक नालसार यूनिवर्सिटी है जो कि NLU हैदराबाद के नाम से कॉमनली स्टूडेंट्स लोग जानते हैं. एंड NLU हैदराबाद ने इसी साल एक 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स.
वो भी आपका IIM इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIM इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, दे विल बी कंसिडरिंग द स्कोर ऑफ अदर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल, CLAT एंड JEE। इसके अलावा भी है, बट दे ऑल्सो एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ IIM इंदौर। सो प्लीज मेक श्योर वेन एवर यू आर फिलिंग द फॉर्म फॉर IIM इंदौर, अगर आपको दूसरा वाला कॉलेज भी टारगेट कर रहे हैं, मे बी IIM रांची, निर्मा यूनिवर्सिटी और योर नालसा यूनिवर्सिटी, सो आपको कॉलेज के फॉर्म सेपरेटली फिल करने होंगे। आपको IIM इंदौर का फॉर्म भी फिल करना होगा एंड सेपरेट कॉलेज फॉर्म्स भी फिल करने होंगे। सो दिस वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट IIM इंदौर फिल करके छोड़ देंगे, दैट वोंट वर्क। Alright, so that's it. So I'll be talking about other information about IPM program. Courses offered is 5 years integrated program, talking about the eligibility criteria for the students who are in 12th standard. Their minimum percentage required is 60% in 12th standard, and for the general category, and for SC ST PWD category the minimum percentage is required, that is 55%. Alright, सो अगर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक और भी है, आपका 12th जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय 20th 2021 तक, और यू शुड बी अपेयरिंग in 2022. So these are the basic criteria to apply for IIM Indore. इसके अलावा एज लिमिट भी है. So age limit 5 years of relaxation is given to the candidate from SC ST PWD category, जो है उनका जिनके डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 1 अगस्त 1997 है, वो लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली. Alright, so talking about the selection process, you'll be having the entrance exam, and entrance exam में the weightage of entrance exam is 65%, and the rest of the 35% will go to the personal interview. So once you crack the entrance exam, you'll be appearing for the interview, and ओवरऑल वेटेज इज 100%. उसके बेसिस पर आपका जो भी फाइनल स्कोर होगा उसके बेसिस पर यू विल बी गेटिंग दी सीट इन IIM इंदौर. ओके, सो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाज स्टार्टेड ऑन 12th of April 2022, and last day to fill up the form is 21st May 2022. Exam date is 2nd July 2022. That means 2nd July को entrance exam होने वाला है. The application form fees is 4,130 rupees for general and OBC category. Students from SC, ST and PWD category, the application fees will be 2,065 rupees. Alright, so how to fill up that form, I'll be talking about that thing. I have got the direct link for IIM Indore. Once I click on this particular link, it will give me the main registration page for IIM Indore. So I have filled a dummy page for you guys. You just have to mention your full name here. You'll have to mention the gender. Right hand side you have a category option, you have to punch in the category. Person with disability, yes or no. Guys, if you're falling under this particular category, please make sure that you have a certificate for that, because अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, you will not be able to attach the document. आप उसको फिर नो करना होगा. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी, अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आपके पास उसका एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए. सो इफ़ यू आर PWD कैटेगरी, येस और नो, यू कैन पुट नो. You need to punch in the date of birth, you have to punch in the email ID, and on the right hand side you have to confirm the email ID, same email ID there. You have to choose the nationality, country of residence, your country code, which is 91 for India, and your mobile number, and you will have to confirm the same mobile number on the right hand side. A lot of universities does this, so they ask you to confirm your email ID and mobile number again, because that is the most important piece of information for them, because that is the only medium through which they'll be contacting you. So अगर आपके email ID गलत हो गए, they won't be able to contact you then. So that is why a lot of university does it. In the form itself they ask you to confirm your email ID, and if there's any discrepancy they will highlight there कि आपके mobile number और email ID match नहीं कर रहे हैं. So this is a common strategy which the forms should have. Okay, so below that you have to punch in this particular part, which is the captcha, and after putting the captcha you just click on submit. Once you do it, it will give you this particular option. You will get these things filled, and then you will get these options. So please cross check each and everything, whatever information you have filled, because अगर आपकी कोई गलती होगी, it will be very very difficult for you to make the changes later on. So once you see that particular thing, you will on top right you'll see an option says go to application form. You will click on it and it will give you this particular page. So on the left hand side, my mobile number, my name is already mentioned. I will have to punch in the father name and the mother name on the right hand side. The date of birth is already mentioned.
these information already given because I have already filled in the first page. Below that I will have to mention the address. Okay, so that depends on your choice कि आप address 1 में ही पूरा address डाल दें or you want to divide your whole address into different sections. So आई वुड हैव डन इट, मैं चाहता तो इसको हाफ पार्ट को यहाँ फर्स्ट एड्रेस में, सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में डिवाइड करके लिख सकता था. एंड देन वी हैव द कंट्री, स्टेट, city, district and pin code number. This information you need to punch in. Once you do it, you need to go down and you'll have to see this information. So once you do it, you will have to attach the passport size photograph and the signature. Below that you will have to attach the ID proof. So normal ID proof जो होता है हम सबके पास, that is the आधार कार्ड. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अपना पासपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं. Alright, so यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अटैच करना होगा. There are a lot of students who faces the problem in attaching the photograph because जो भी आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं अपने फ़ोन से, अपने फ़ोन से और किसी डिजिटल कैमरे से, सो आप उसका जो साइज़ होगा फोटोग्राफ का, दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 4 MB 5 MB डिपेंडिंग अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ द कैमरा और photograph you're taking. So you need to compress the photograph and signature and you need to attach that. How to do it? The lot of softwares are available in Google and even you can use the paint option to compress the photograph. Supposingly you have a photograph of 3 MB, supposingly you want to compress it to 30 KB. So just go to Google and type there compress image to 30 KB. Okay, you'll get a lot of softwares online. Just have to upload the document, convert it, and it will automatically convert the photograph into desired particular KBs or particular size. Okay, so this is the process which you can use to compress the photograph. उसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट को यूज़ नहीं करना है अगर आपको, तो आपके पास पेंट ऑप्शन भी होता है. अगर आप फोटोग्राफ को पेंट में ऑप्शन कर देंगे, ऑन द टॉप लेफ्ट यू हैव अ रीसाइज ऑप्शन को यूज़ करके आप ऑटोमेटिकली उस फोटोग्राफ को कंप्रेस कर सकते हैं. सेम गोज विद दिस पर्टिकुलर थिंग. यू विल हैव टू अटैच द आधार कार्ड ऑल्सो. For a dummy reason, I have already attached my Aadhaar card, photograph and the signature. Once I do that, I can cross check those documents which I have attached. I can click here and I'll be able to view the documents which I have attached. आप उसको देख लीजिए वो ठीक से अटैच हुआ है, क्लैरिटी है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कि नहीं है, आप उसको प्लीज़ ध्यान से देख के देन आप उसको सबमिट कीजिए. ऑलराइट, so once you do this particular part, you will click on save and next. Once you do it, it will ask you to put your information for 10th standard and you'll have to punch in the information for 12th standard also. So on the top left, you have a year of completion. Those who are in 12th standard right now will be giving the entrance exam this year. उनके लिए 2020 will be the year of passing for 10th standard अगर gap year नहीं है in between. Okay, so 2020 I have written aggregate percentage. You have to punch in your board on the right hand side and your school name. You have to punch in those information and उसके नीचे आपको अपना 10th का मार्कशीट आपको अटैच करना है. Alright, so 10th की मार्कशीट भी अटैच करनी है. That means whatever percentage I am giving there, उसका एक required document है वो भी मैं साथ में अटैच करूँगा. Alright, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें अगर आपने IIM रांची का फॉर्म, IIM रोहतक का फॉर्म फिल किया है, अगर आपने उसमें आपने देखा होगा IIM रोहतक के डॉक्यूमेंट में यू विल हैव टू सेल्फ अटैच दैट डॉक्यूमेंट एंड यू विल हैव टू गेट इट साइंड बाय द नोटरी एज वेल. ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपके पास वो स्कैन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भरा हुआ है नोटरी वाला एंड सेल्फ सिग्नेचर है, अगर आप उसको भी यूज़ करेंगे दैट विल वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर IIM इंदौर एज वेल. सो ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपने वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. Alright, so I'll be talking about the next section which is for the 12th standard. यहाँ पर it will ask you an option which says have you completed 12th or not. If you are in 12th standard, you will be giving the boards this year. That means you have not completed a 12th standard, so you will click on no option. You will have to choose the 12th type or diploma. So I will choose 12th type. I will have to choose the board, my school name and the stream I belong to. Once I do it, I will click on submit option and I will get this particular declarations. So I will have to see and accept these terms and conditions and I will click on I agree on the right hand side. This is the captcha which I will have to punch in and I will click on submit option. Once I click on submit option, it will give me this particular page where I will have to choose the
city priority where I want to give the entrance test. Supposingly I am in Delhi region and I want to give the entrance test in the city, nearby city. So आपको मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगा, जब भी आप प्रेफर्ड सिटी लिखते हैं फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, चूज़ दी नियरेस्ट सिटी वेर एवर यू स्टे, बिकॉज आपके लिए ट्रैवल करना मुश्किल होगा जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे. वी वुड रिकमेंड जो आपके नियरेस्ट लोकेशन है, आप उसी लोकेशन पर आप अपने डिज़ायर्ड लोकेशन को दीजिए. ठीक है. सो फर्स्ट सपोजिंग आई स्टे इन दिल्ली, सो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपना दिल्ली दे दिया, एंड नोएडा मैंने सेकंड दिया है, गाजियाबाद मैंने थर्ड दिया है, गुड़गांव फोर्थ दिया है, एंड मेरठ वॉज द नियरेस्ट वन फिफ्थ ऑप्शन के अंदर, तो मैंने मेरठ सिटी दिया. तो दीज आर माई 5 years 5 प्रेफरेंसेस फॉर दी सिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम. तो आप वही उसको इसको सेम को चूज़ नहीं करेंगे, आपके लोकेशन के आसपास जो भी नियर सिटी है आप उसको चूज़ कीजिए. Alright, so once I do that, it will give me an option to save, and next I will click on that option, and that's it. It will take me to the payment gateway. I will make the payment using the desired option. It has all the options, UPI option, debit card, credit card, net banking, all the options are available to make the payment. And once you make the payment, your form is done. Once you fill up that form, please save your application form. You will get an SMS from IIM Indore. वो आपके पास application send करेंगे with the password. You will have to save that user and password somewhere, because जब भी आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यू नीड दैट क्रेडेंशियल्स, तो आपको यूज़ करना होगा. फॉर प्रथम स्टूडेंट्स हमने एक ऑप्शन बनाया है इन द प्रथम अकाउंट इटसेल्फ, इन देयर पोर्टल इटसेल्फ, विच इज़ कॉल्ड फॉर्म्स वॉलेट, जिसके अंदर जाकर आप अपने सारे प्रथम स्टूडेंट्स अपने सारे यूज़र नेम पासवर्ड को सेव कर सकते हैं. दे कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. ऑलराइट. So this is how we fill up the form for IIM Indore. If in case you guys face any kind of problem in filling up the form still, you can contact us. Mobile numbers on the given left hand side. You can contact us from 10 to 7. If in case you have not joined anywhere for the entrance test, it is the high time, because सारे forms almost released हो चुके हैं, and there are a lot of universities who have already started their entrance test. Christ University किसके दो already slot जा चुके हैं. नारसी मुंजी has also started their entrance test. So बहुत कम टाइम बचा है टू गिव दी एंट्रेंस टेस्ट. सो आप प्रिपेयर करना जल्दी से शुरू कीजिए. अगर आपको ज्वाइन करना है प्रथम, वी हैव आवर फोन नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जस्ट कॉन्टैक्ट अस, विल डू द काउंसलिंग पार्ट, विल मेक यू अंडरस्टैंड वॉट एवर कोर्सेज आर अवेलेबल, एंड यू कैन ज्वाइन द प्रथम channel. Okay, those who have already joined somewhere, अगर आपने कहीं already join भी किया हुआ है, no problem, still we can help you in preparing you for the entrance exam. How? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज़ प्रथम टेस्ट प्रेप. वहाँ पर हम कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस रन करते रहते हैं, वोकैबुलरी रिलेटेड क्लासेस रन करते रहते हैं फॉर एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड. सो आप उन वीडियोस का प्रेफर कीजिए. फॉर द लॉ स्टूडेंट्स हमने लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस भी वहाँ पर हम लोग चलाते रहते हैं. सो आप वहाँ पर आपके पास अगर चैनल का आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो यू विल बी एबल टू सी ऑल दी नोटिफिकेशंस वॉट एवर वीडियोज़ वी विल हैव इट, एंड आपको वो चीज़ डेफिनेटली हेल्प करेगी टू क्रैक द एंट्रेंस टेस्ट. Alright, so we'll be creating the more videos for the upcoming forms. So till that time, please take care of yourselves. Please work hard for your entrance exam and for your board examination too. Take care and have a nice day, people.